last class, we studied about company, right? We completed public company, private company. What is the procedure of registration of the public company? What is the difference between public company and private company? We completed all these topics. But in all these topics, some words are very much common. What are those words which is very much common? That is memorandum of association and article of association. Okay, so in today's class, the word memorandum of association and what is article of association, we are going to complete it in today's class. But before that, I just want to know that who is going to tell me about what is the difference between public company and private company? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What is the difference between public and private company? Who is going to tell me about it? Basic difference to batao, basics batao. Raise your hand who is going to tell me about the differences between the private and public company. कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. What is the difference? Yes. And private company ऐसा company होता है जिसका shares public को नहीं issue किया जाता. Speak in English, Anisha. Speak in English. Yes, ma'am. Private company is a company whose shares is not given to public. Shares are restricted basically, right? Yes, Shares yes. are restricted, right? Yes. Next. But when public company gives shares to public. And what about the prospectus? Private company issue prospectus or not? They are issuing prospectus or not? Private company? Public company give prospectus of them. Why? Why? Because ma'am, they have to share their shares to public. Okay, so that prospectus is a kind of we can say that is an outline about the company, that if you are going to invest like 5 lakh, 10 lakh rupees, that company is financially stable or not. Like for the security purpose, we can say that the public company are issuing the prospectus for the general public, right? Now the next, what is the next difference? What is the next difference? What is the next difference? Raise your hand. Raise your hand. What is the next difference? Okay, Mahi, tell me. Ma'am, a public company is owned and traded publicly on the stock exchange, and ma'am, a private company is owned and traded by privately. Basically, public companies are issuing the shares. That's why they have to register under NSE, National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange. But the private company is not issuing any shares. Okay, so that's why they don't need to be listed in this BSE or NSE. Next difference. Who is going to tell me about it? Next difference. Yes, Akrish. Yes, Akrish. Certificate of incorporation is required in starting a business in public company. Very good. And what about the private company? No requirement of certificate. Very good. Basically, the certificate of incorporation, when your company is registered, means your company is registered as a limited company, it means public company. In that case, after registration procedure, that registrar will provide the certificate of incorporation. Right? And after getting that certificate, you are eligible for starting your business. But once you will get the certificate of incorporation in the public sector, then after that you are eligible for starting the business. But the same situation is not with the private company. Once your company is registered as private company, then after that you can start your business anytime. You can start your company anytime. Right? Next difference. Next difference. Numbers ke term mein, what is the difference between numbers? Who is going to tell me about it? Yes, Priya. Yes, ma'am. Minimum member in public company is 7 and maximum no limit. Okay, what about private company? Minimum number in this company is 2 and maximum is 200. Very good. So in public company, the minimum members are required is 7 and maximum there is no limit. But in the
private company, the minimum number is 2. But there is one exceptional case that is for OPC, one person company. And for one person company, only one people, naam se hi that is suggesting like एक person की requirement hai. One person is required, right? But for the private company, 2 minimum members are required. And for maximum, that is 200. Okay. Next is about what is the minimum paid up share capital for the public and private company. Who is going to tell me about it? Public. Yes, Priya. Yes, Priya, tell me. Okay, next, Pratyay, tell me, what is the answer? What is the answer for the minimum paid up capital? यस मैम, इसका मैम पहले मैम 1 लाख रुपया था मैम, अभी उसका मैम For what? For what? For what? 1 lakh rupees is for what? One lakh rupees minimum paid up share capital was earlier for the private companies, but after amendment of 2015 Companies Law में Companies Act, Indian Companies Act Amendment 2015, now we don't need minimum amount for that. If you are going to start the private company, you can start with 1,000, 2,000, 10,000, 15,000. This जो ये आपका condition था 1 lakh rupees was basically removed after amendment of Companies Act 2015, right? Okay, the next one is about the public company. What is the minimum paid up share capital required for company, Indian Companies Act, public company, under Indian Companies Act? For public company? For public company, it required 5 lakh rupees. Minimum paid up share capital required 5 lakh rupees in public company. Okay. What about the directors? How many directors are required in the private company? How many directors? For the private company, the 2 directors, minimum 2 directors are required. And for public company, earlier it was 7 according to Indian Companies Act 1956. But now it is the public company required minimum 3 directors. Clear okay, but and in OPC, one person company, only 1 director is required. Okay, so we already completed the differences, and I understand that because of this. So basically, for registration of the company, we required MOA. What is Memorandum of Association? Basically, Memorandum of Association is the legal document which basically contain the information regarding to the companies. What kind of information? Basically, it consists of this is basically utilized for the shareholders के लिए basically. और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? It consists the name clause should be there, registered office clause, ठीक है? And the object clause, what is the basis of starting the business, what is your objective, what is the incidental objective, right? And what is the liability for the members of the company, capital clause, how many amount you invested in the company. So all these things are basically under the MOA, Memorandum of Association. But when we are talking about the AOA, Article of Association, it consists of all the internal constructions of the business, internal management of the business. So in short, what is the meaning of MOA? Just write it. Likhiye isko. Memorandum of Association. See, I am just telling you all these things in brief, right? Because it is not as such necessary in Companies Act. Okay. So Memorandum of Association, right? MOA, Memorandum of Association represents the charter of the company, charter of the company, charter of the company, charter of the company. ठीक है, charter है, it consists of all the information about your company basically. यहाँ पे information is regarding to all the members, about the registered office, about the capital, about the liability, everything. And why it is required? Basically because the public company जो होती हैं उनको obviously shares issue करना होता है market में. And if they have no knowledge about the company, how can they believe on such company, right?
So because of that only MOA is required, and it is basically made before the registration of the company. Company को register करने से पहले ही we have to make this MOA, Memorandum of Association. Okay, so MOA represent the charter of the company. The next point, right? It is a legal document. It is a legal document. It is a legal document prepared during the formation. It is a legal document. It is a legal document prepared during the formation, and registration process of a company, to define its relationship with shareholders and its specific objective, and it specifies the objective for which the company has been formed. So MOA, Memorandum of Association, क्या है? Represent the charter of the company. Next is like it is a legal document. It is a legal document. Basically, why it is prepared? It is prepared for showing the relationship. एक relation दिखाने के लिए between the shareholders, who are the member of the company, as well as what is the objective of the company, why the company is started, what is the reason behind it. So this is Memorandum of Association. And it is basically made before the registration of the company. Registration से पहले MOA और AOA आपके पास होने चाहिए, because we have to upload that document at the time of registration of the company on the portal which is given on the MCA, Ministry of Corporate Affairs. Clear हो गई बात? So the company जो होते हैं, what मतलब company can undertake all those activities that are mentioned in the MOA. मतलब MOA में जो भी होगा जो भी चीजें आप mention करोगे, they are going to take in the future as well. ठीक है? और that is basically telling the company, जो MOA होता है ना, that is basically telling a company that what is your limit. यानी कंपनी का लिमिट क्या है, क्या आपकी बाउंड्री है, क्या आपके कार्य करने का, जो आप बोल सकते हैं काम करने का आपका क्या लिमिट है. इससे बाहर आप नहीं जा सकते. You cannot go beyond this, whatever is mentioned on in a MOA. So Memorandum of Association is also, we can say that it is a boundary which specifies the company that this is your limit. You cannot go beyond this boundary, right? So the Memorandum of Association charter है, legal document है, उसमें सारे एक्टिविटीज मेंशन है, ऑब्जेक्टिव मेंशन है, रिलेशनशिप को दिखाता है शेयर होल्डर्स के और कंपनी के, और साथ साथ में एक आपके क्या आप एक्शन ले सकते हो, आपका क्या वर्क जो है आपका, उसका बाउंड्री क्या है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ योर वर्क, व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर एक्शंस. और सो दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज हेल्पफुल फॉर हूम. MOA जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, समझ आ रहा है? पहले ये बताओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, समझ रहा है? लीगल डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा, एक डॉक्यूमेंट है. जैसे आपके बोल सकते हैं ना, जैसे एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस, आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं, लाइक वैसे ही MOA जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उसके पोर्टल पे आप जाइएगा तो यू कैन चेक इट आउट दैट व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर योर न्यू कंपनी यू हैव टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट MOA and AOA, right? So MOA is basically, that is a legal document. But this legal document is helpful for whom? किसके लिए जरूरी है, किसके लिए फायदेमंद है? तो these are helpful for, MOA is helpful for शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी है, शेयर होल्डर्स के लिए, आपके क्रेडिटर्स. हु आर क्रेडिटर्स? हु आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? Who are providing you loan, who are giving you product on credit, right?
लाइक जो आपको लोन के बेसिस पे प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो फॉर द क्रेडिटर, फॉर द शेयर होल्डर्स और हुएवर इज डीलिंग विद द कंपनी, कोई भी जो लोग हैं जो कंपनी से डील कर रहे हैं, सप्लायर्स एंड ऑल, फॉर देम व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द राइट्स, जो है कंपनी के पास क्या क्या चीजों का है, वो नॉलेज शेयर होल्डर्स को भी होना चाहिए, क्रेडिटर्स को भी होना चाहिए, सप्लायर्स को भी होना चाहिए, और बाकी जो है उनको भी होना चाहिए, है ना, जो भी रिलेटेड है आपके कंपनी के साथ। सो MOA is helpful for, MOA is helpful for, लिखिए, for the shareholders, for the shareholders. In next class now I'm going to show you the format of MOA, ठीक है, that how we can make the MOA, ठीक है। Why I am saying this, that if any of, okay, so लिखिए, MOA helps the shareholders, MOA helps the shareholders, shareholders कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी के जो स्मॉल डिनोमिनेशंस, जो कैपिटल जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 10 रुपए का एक शेयर, 20 रुपए का एक शेयर, लाइक दिस, जो वो परचेज करते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स, और वी कैन से दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, राइट। सो लिखिए, द MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स द शेयर होल्डर्स, creditors and any other person, and any other person, and any other person dealing with the company to know the basic rights, and power, basic rights and power of the company, basic rights and power of the company. Like whoever is the third party for the company, we can say, like the supplier, the creditors, the bank, and all these third parties have right to know about the company, and how they can get knowledge about it by through we can say MOA, memorandum of association, ठीक है। So MOA is basically helpful for taking the decision. For whom? Basically for shareholders, it is a legal document that is helpful for them. Like if they want to invest in company, is their decision is prudent or not, समझदारी वाली डिसीजन है या नहीं, इस चीज के लिए, इस तरीके के डिसीजन को लेने के लिए MOA is a helpful document, ठीक है। So we can say that MOA helps the prospective shareholders in taking the right decision while thinking of investing in the company. Like if you want to invest 5 lakh rupees in the company, or if you want to invest 10 lakh, 5 lakh, 2 lakh, 2000 even, but everyone want what? Everyone want profit, right? And if they are not able to get the profit, for what we are investing? That is the main thing, right? तो इस चीज को समझते हुए, इस चीज को जानते हुए, हम कह सकते हैं कि it is helpful for the shareholders to take the prudent decision about the investment in the particular company, ठीक है। So MOA जो है, and it can be, MOA जो है ये साइन होना चाहिए, इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए? MOA must be signed by at least 2 subscribers in case of the private company, यानी जो 2 मेंबर्स हैं उनके द्वारा साइन होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और 7 लोगों का साइन होना चाहिए इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। So MOA जो है must be signed by at least 2 subscriber in the case of the private limited, because we all know that in the private company the 2 minimum members are required, right? But in the case of the public company, the minimum members 7 minimum members are required. So in that case, what we have to do, at least 7 members have to sign on that particular legal document, and that is MOA, memorandum of association. Clear हो गया? डन, समझ में आया? MOA सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. What is the format of MOA, memorandum of association? क्या क्या फॉर्मेट होता है? तो इसमें कुछ टेबल्स बने होते हैं, क्या बोल रहे, पढ़ लेते हैं। So format जब कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो then we'll understand what is the format. So what is the content of the MOA, memorandum of association में क्या क्या चीजें होती हैं? नेम क्लॉज होना चाहिए, एक नेम का क्लॉज, यानी नेम का एक अलग से आपका टेबल बना रहता है। What is in memorandum of association में क्या बेसिकली होती हैं चीजें, कौन कौन से क्लॉज होते हैं? So there is one name clause. So name clause में क्या होगा, इसमें कंपनी का नाम क्या है वो आपको लिखना है, मेंशन करना, what is the name of the company. अगर जो नेम है कंपनी का, if the name of the company is not identical, मतलब अलग नहीं है, if that is not different,
ठीक है। तो ये मतलब होना चाहिए, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि सॉरी सिमिलर नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी नाम। एंड साथ साथ में आपका जो प्राइवेट कंपनी है उसके बैक साइड प्राइवेट लिमिटेड एंड में होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड, सबको ही पता आई थिंक ये वाली चीज है, ठीक है। सो देयर शुड बी द नेम क्लॉज, सो नेम क्लॉज इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का क्या नाम है वो आप मेंशन कर सकते हो उसमें क्लॉज में। और नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि वेयर योर ऑफिस, यानी आपका ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड प्लेस कौन सा है, ठीक है। सो अगर कोई स्टेट है, ठीक है, द क्लॉज स्पेसिफिक क्लॉज जो है वो स्पेसिफाई करेगा कौन से स्टेट में आपका कंपनी है, ठीक है, कंपनी कहाँ सिचुएटेड है बेसिकली, एंड इट विल टेल यू दैट व्हाट इज योर जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन? इट मींस दैट व्हाट इज योर एरिया, ठीक है, आपका एरिया कौन सा है, जुरिस्डिक्शन। आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज समथिंग बेसिकली विच स्पेसिफाई दैट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच योर कंपनी इज सिचुएटेड, as well as it is also helpful for determine what is the jurisdiction of the registrar of the company, एंड कंपनी का जो लोकेशन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज जो है, आपका कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगा विद इन 30 डेज, तो इनकॉर्पोरेशन का डेट मान लो कि आपका 30 जुलाई है, तो आपका 30 अगस्त तक आपका वो एरिया रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, यानी कि वो एरिया जहां पर आपका ऑफिस है दैट शुड बी द ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के 30 दिन के रजिस्ट्रेशन के अंडर में यू हैव टू शो दैट योर एरिया, दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल एरिया इज registered area. The next one is the object clause. The object clause is something which is related with that. What is the objective of formation of your company? Why you started that company? What is the reason behind it, right? Like objective can be sub-categorized in the 3 categories. मतलब 3 categories आपके objective में है। पहला है कि आपने business को शुरू क्यों किया, main objective। उसके अलावा कि आपके मतलब मेन ऑब्जेक्टिव के साथ सपोर्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अलावा कुछ अदर ऑब्जेक्टिव। तो इसको इतने लॉन्ग टर्म में लर्न मत करो, बस ऑब्जेक्टिव क्लॉज इज समथिंग लाइक यू हैव टू मेंशन दैट व्हाई यू स्टार्टेड योर कंपनी। क्लियर हो गया? Next one is the liability clause. So these are the content of MOA, like name clause should be there, the registered office clause should be there. The third one is like what is the object clause, and the next one is liability clause. So in liability clause you have to state that what is the liability of the member of the company. लाइबिलिटी क्या है आपकी कंपनी के मेंबर्स का। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो उनकी ऑब्वियसली लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और जहां पर लिमिटेड होगा वहां पर आपकी, जहां शेयर्स के साथ लिमिट कर दिया आप लोगों ने कंपनी को, तो वहां पर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। Then the next one is the capital clause. So capital clause at its name is suggesting like what amount, what is the maximum capital. मतलब ये clause आपको डिटेल देगा कि maximum capital that company can raise, which also called the authorized or nominal capital, यानी कितना कैपिटल आप रेज कर सकते हो कंपनी के थ्रू, यानी आपका ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है वो आप इसे मेंशन करोगे, ठीक है। आपने कितना शेयर मार्केट में इशू किया है, ये सारी चीजें यू हैव टू मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज। सो दीज 4-5 टर्म्स आर द पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो इन शॉर्ट व्हाट इज MOA? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। Why it is required? Basically it required for shareholders, for creditors, for third parties, ठीक है, for decision making. And what it consists? It consists 4-5 clauses, जैसे name clause है, registered office clause है, name clause और registered office clause है, object clause आपका है, liability clause है, and the next one is last वाला clause कौन सा है? Capital clause, ठीक है, liability clause. So ये सारे आपके क्लॉज मेंशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज AOA. इसको मैं एक बार फिर से कराऊंगी। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. So article of association basically it consists of all the rules and regulation which is required for running the business. ठीक है,
So AOA जो है it is also required at the time of registration of the company. एंड इसमें आपकी क्या क्या चीजें होंगी, इसमें आपकी कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। उसके अलावा इट विल कंसिस्ट द शेयर कैपिटल क्या है आपका, कॉल शेयर को आप कॉल्स ऑन शेयर्स क्या है, शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करना, फॉरफिट यानी शेयर को कैसे वापस लेना है, फॉरफिटिंग द शेयर, ठीक है। तो फिर कैपिटल में चेंजेस करना होगा तो कैसे करेंगे, फिर आपका एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम को कैसे बुलाएंगे, मतलब एजीएम के लिए मीटिंग प्रोसीजर्स वगैरह कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे आपके डायरेक्टर्स का, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए डायरेक्टर्स का, पावर क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, किस तरीके से बोरो कर सकते हैं पैसे कंपनी के लिए। सो इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर के लिए जो भी बोल सकते हैं ना प्रोसीजर्स वगैरह जो बनेंगे ना, दैट शुड बी मेंशन इन द एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दैट शुड बी नॉट दैट हैव टू बी राइट। सो व्हाट इज एओए एंड हाउ इट इज बेसिकली मेंशन्ड, इसको किस तरीके से एओए का क्या फॉर्मेट है, एमओए का क्या फॉर्मेट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। सो आई कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है राइट। तो आप जैसे आप टैली देख लो, टैली क्या है आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, उसमें आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड, आपके परचेज सेल्स से रिलेटेड हर चीजें होती है ना। सो ऑडिट जो आपका प्रोसीजर है दैट इज फॉर इंस्पेक्शन अबाउट द ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट लॉस का क्या सिचुएशन, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। इसको इंस्पेक्ट करने के लिए हमें क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ती है कि आपने कहीं कुछ, आपने बुक्स को गलत तो मैच नहीं किया हुआ है, आपने कुछ ऐसे जो आपके बोल सकते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, ओमिशन हो गया हो, बदलाव किया हो। तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए वी रिक्वायर्ड ऑडिटर्स, ठीक है। आप कोई घपला तो नहीं कर रहे हो कंपनी में। तो ऑडिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है, ICAI, ठीक है। ICAI के थ्रू इनको डिग्री मिला हुआ होता है जिनको हम चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं। तो दे आर बेसिकली वर्किंग एज अ ऑडिटर एंड दे आर इंस्पेक्टिंग द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द कंपनी। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं उनके तो अपने गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है फॉर द ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स और बुक को ऑडिट करने के लिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो मार्च के महीने में बेसिकली ज्यादातर ये ऑडिट का काम चलता है। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो द ऑडिटर विल फाइंड आउट। एंड अगर बहुत ज्यादा बड़ा घपला, रिकॉर्ड्स को चेक करने का तरीका है, आपकी कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपकी कंपनी कितनी हेल्दी है, ठीक है, आपकी कंपनी में कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को फाइंड आउट करने का तरीका होता है आपका ऑडिट करना। क्लियर हो गई बात। और हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना है अपने अकाउंट्स, हर एक कंपनी के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में टुमारो। ओके, Thank सी you, यू ऑल इन ma'am. द नेक्स्ट। Thank you, ma'am. ओके ओके Thank you, ma'am. ओके ओके।